Hey, 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 hey. नया कोई गुल खिलाएगी नया गुल कोई खिलाएगी अब तो चंचल है तेरा देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन की नया गुल कोई खिलाएगा नया गुल कोई खिलाएगा कभी तो चंचल है मेरे मन देखो ना देखो नाへいへいたまらない水なし小杖を持つ赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃんあばらがら早くといけないが早くといけないがああああああああ組みましょうそうあでかまろだろだろそうだろあ、YouTube チャンネルわかんねえよわかんねえわかんねえकभी तो चंचल मेरे नैना
ちょっと待ってください。旅ちゃんちゃのミラとかなんだこれ。Why can I not?いいかないいのかなこれいいでしょトランスフォームよし。あ。よし。よしゃ、よしゃ、よしゃ。これかなあべ
Yeah. Mine. I guess that's okay. Completo ciao. 悩で恋する愛が悩ぐる恋する愛がजनाब आलम止まったとちょっと待ったじゃ待った止まったギャローゲロ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 エロエロいエロいですね偉いですねはいI'm you be back be back be back 大学で恋してない
जाना मेरी जान बात आके जान तेरी तुझको तुझे मैं इतना ना ही कहूँगा, मैं बस इतना ही कहूँगा कि I'm yours. I'm yours. मेरा नाम है योश. आपका क्या नाम है? शाह. Right. Let's start. Deployment was in earlier parts of full stack open, we deploy the backend to render or flight or I/O. With Next.js, the most natural deployment. Next.js. Versal's platform is built specifically around Next.js. So features like server components, server actions, static rendering, and revalidation work out of the box without any extra configuration. Server components, server actions, static rendering, and revalidation work out of the box without any configurations extra. To deploy, first you push your code to a GitHub repository that I did. Go to voicel.com and sign up with your GitHub account, get new and then check, then select the GitHub repository contains your Next.js app. Note that it might take time until your repository becomes visible. Voicel automatically detects that it is a Next.js project and configures the build settings. Just click deploy. That is it. After a short build, Voicel gives you a public URL, something like that, and where your app is live. Every time you push new commits to the main branch, Voicel automatically rebuilds and redeploys the app. Every time you push new commits to the main branch, Voicel automatically rebuilds and redeploys the app. If you push to a different branch or open a pull request, Voicel creates a preview deployment with its own unique URL, so you can test changes before merging. Our app seems to work until we try to create new nodes. Something strange seems to be going on. A newly created node might appear briefly, then vanish on the next page load, or it might not appear at all. The reason is that on Voicel, server components and server actions run as a serverless functions. Each request may be handled by a different function. The reason is that on Voicel, server components and server actions run as serverless functions. तुझको बता दूंगा मैं कुछ तो, अरे मेरा la 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 la. The parameters are permanently locked. Okay, so to understand what a serverless function is, you must understand what it replaces. The traditional server, the old way, imagine renting a physical computer in Tokyo in a data center. You turn it on, install Node.js and run your app. That computer runs 24/7, 365. If 0 users are using your app at 3 a.m., you are still paying for electricity, the RAM, and the CPU. If 10,000 users
hit your app at once, that single computer overheats, crashes, and your app goes offline. The serverless function, the enterprise way. Serverless is a terrible name. There are still servers, but you don't manage them. Instead of deploying an entire running application, you deploy a individual isolated functions to a cloud provider like Vercel or AWS. There are still servers, but you don't manage them. Instead of deploying an entire running application, you deploy individual isolated functions. Okay, you deploy individual isolated. Instead of deploying an entire running application, okay, instead of deploying an entire running application, you deploy individual isolated functions to a cloud provider like Vercel or AWS. Individual isolated functions to a cloud provider like Vercel or AWS. Here is exactly how it behaves. Dormancy. What's a dormancy? QK 状態 QK 状態潜在 I want that. Your code is dead. It is stored on a hard drive, doing absolutely nothing and costing you $0. The trigger. A user clicks a button like toggling a star or submitting a form. The browser sends an HTTP request to Vercel. The execution compute. Vercel instantly spins up a micro container, loads your specific function into memory. Vercel instantly spins up a micro container. Okay. Vercel instantly spins up a micro container, loads your specific function into memory, executes your logic connecting to the database to update the star, returns the result to the user, and then instantly kills the container. Boom. Okay, the code is dead. It is stored in a hard drive. Okay, on a hard drive, doing absolutely nothing. When a user clicks a button, like toggling a star or submitting a form, the browser sends an HTTP request to the Vercel, and then the execution happens. Like Vercel instantly spins up a micro container. It's gonna spin up a micro container, loads your specific function into memory. It's gonna load a specific function into memory, gonna execute the logic, like connecting the database and updating the star, and it's gonna return the result to the user and then instantly kills the container. No, okay. The Vercel reality, what you need to know. In Next.js, every time you write a use server action or create an API route, every time you write a use server action or create an API route, Next.js automatically compiles that single block of code into a serverless function when you deploy to Vercel. By default, and then मुझको stop Beamer. Every time you write a use server action or create an API route.ts, Next.js automatically compiles that single block of code into a serverless function when you deploy to Vercel. Because it operates this way,
you must design your architecture around two absolute rules. Statelessness, this is exactly why your star button bug happened earlier. When a servlet function dies, its RAM is wiped clean. Okay, statelessness. When a serverless function dies, its RAM is wiped clean. You cannot save state, arrays, or user sessions in a variable. In variables, every time single serverless function must start, every single serverless function must start by looking up the absolute truth in an external database. PostgreSQL, infinite scalability. If 10,000 users click a button simultaneously, Vercel instantly spins up 10,000 separate serverless functions. Processes them all at the same time, and processes them all at the exact same time in parallel and kills them. Your app never crashes. When you finish building Kira, it will rely heavily on serverless architecture to process immense amount of data without slowing down the user's browser. If a user imports a Japanese YouTube video and asks Kira to pass the subtitle, you will not do that heavy text processing on their laptop. The Next.js frontend will ping a serverless function. That function will wake up, download the raw subtitle file, pass out every single Japanese sentence, extract the Japanese vocabulary, calculate the dictionary definitions, save it to PostgreSQL, and spin down. The user gets a lightning fast experience because Vercel's enterprise hardware did all the heavy lifting in a fraction of a second. Okay, the reason is that on Vercel, server components and server actions run as
Call me what you want. Call me what you like. 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 カラメबढ़ा रहा हूँ मैं दोबारा से कालमे बढ़ाऊंगा कालमे अच्छी लगती है Love me like you do. Love me like you do. Nobody's gonna love me like you. Nobody's gonna love me like you do.
Hi. Let's continue. Charo. Gero. Okay. Okay. Environments. Crucial fix. Look at the environment checklist. You have the production and preview check, but deployment is a checked. Action. Check the deployment box. If you leave it unchecked, Versa will not generate a database key for your local machine. When you run npm run dev in VS Code to test your API, your app will crash because it won't. It's been 2 hours. Oh, sure. It's not. Check the deployment. Okay, I'm checking it. Sensitive. When you run npm dev in VS Code to test your API, your app will crash, but it won't have permission to talk to Neon. Custom prefix. Look at the bottom field. It sets default to storage URL. To database or Postgres. Change storage to database. Charo. Quiero. Okay. You will have to write extra boiler. If you leave it storage URL, you will have to write extra boiler. In the enterprise world backend, ORM select drizzle and press by default to looking for an environment variable like named database URL. If you leave it as storage URL, you will. Hi, Akshay.
What's up? We're back on grind. I had to. Ma. Hi. Back on the grind. In the enterprise world, backend ORM like Drizzle or Prisma default to looking for the environment variable named database.url. If you leave it as storage URL, you will have to write extra boilerplate configuration later to tell Drizzle where to find the key. Keep your environment variable standard. Hey yo, we on same page now. Nah, we are not. Yeah. You'll get the job before me. And you even have the internship. Is that internship over? Or you are still doing it? We are not on the same page. I'm way behind. Database branching, leave unchecked. Ishq happy. This prefix will be applied to the environment variables that are automatically created. रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में. I mean, I don't get why they rejected you. As you told, your interview was chill. I thought, yeah, it's chill and good. He's gonna get it. I don't know, man. I don't know either, man. Maybe they found someone better than me. I mean, from the interview, it seems like the Satcher really liked you. Yeah, I also thought that, but unfortunately, I didn't get it. I don't think. I think, you know, like, I have thought a lot about it. And I came to the point that they will not select me because, you know, like there were a lot of things that were kind of off about the interview. Like the way like the interview was, I think it was just a formality. They already had their choice, I guess. I think they already chose someone, and you know, like my like interview was not technical, so for that reason, I guess, like, you know, it was just formality. They had to do it. Just maybe, you know, like at last they are hiring someone to do their technical thing, and the interview was not technical, so I think they already had their match. I don't know, maybe, I don't know, I'm overthinking it, but I don't know. Like the way the interview was, it was not technical, so that kind of, I don't know, man. It should have been a technical, you know. I think their little ass got scared when you mentioned your kira. They be like, oh, father, they be making our competitor. Shouldn't they hire me? Huh? If I'm making their competitor, shouldn't they hire me and then, yeah, destroy the competition? You know what? Like, it's, you know, it's not just their app. Their app is just that, I think. The main thing is like they have clients, so they make like small projects for the clients, so that's their main business, I think. Sonam, it's done, bro. Yeah, same energy. Ah, fine. I you know what?
I think whatever happened is for the best. Now I can actually focus on Kira and gonna deliver it to the market. Deliver it to the market. Yeah. Like from inside, I already knew that I was not getting selected. I don't know, like, like Japanese people don't really say that, don't really give you the feeling that they didn't like the, what they did, the interview and all that. They kind of have a shell which, like, shows the other person that, oh yeah, the things are going all right, but maybe there was something that was not good, or maybe they had someone already, or they found someone after me good, better than me. It's not just about the language that I know, but maybe it's that tech stack, that all that. So maybe they found someone good. Yeah, initially when you told me about your interview, I was thinking like, man, what kind of interview is this? No technical and they are hiring a dev. I thought maybe they need only language ability, but still it's. But I didn't mention my point to you. I do me ye kya pata hoga? I thought me kya pata hoga unka kuch sahi, or maybe you got too lucky that you got matched with the company which only need language ability. I don't know, man. Maybe they selected like a few candidates. Like, they get a list of candidates, of candidates' profiles, and then they take the candidates like this, and maybe like by some chance I was there on their list. So yeah, they selected me. I went through the interview process, and then maybe there was some guy who already got the match, or maybe after my interview. Who knows? It's all right, man. Everything happens for a reason. If I had gone there, if I had gotten this chance, then I would have not. I would have slacked off on Kira. So it's fine. Though I wasted my 20 something days, but it's fine. Yeah, it's all right. Better than wasting 2 months. So yeah, I can now focus on Kira, and fuck, I'ma build Kira. And your company was looking like too low-key, and no, it was giving 80s Yakuza side vibe, so I thought it was only you, which the company. I thought it was only you which the company know about or selected, so I'll let you in. Yeah, you got your mind on one thing now. Yeah, that is true. I can actually focus on Kira, and hi. Kira will be out in a few months. I'm on, yeah, 1 more week and Next.js will be done. Yeah, doing some database shit today. The posts, the neon Postgres database on Vercel. That's what I'm learning or doing, After this, I have a few more things, authentication and all that. And migration, and after that, I'll work on Kira. I mean, like, what was your reaction when you opened the GML shop?
There is some email from Persona. Did your heart started racing when you read a reaction? Actually, to be honest, I had I had no reaction. I no, I just woke up. I was in my bed and like there was an alarm. Alarm went off on my no, not the alarm. I think like electricity went on. Electricity. There was a power outage. So yeah, garmi lagi mujhe. So I was just like, okay, let's just wake up. I opened my eyes and yeah, just the first thing that I do is take my phone and check my social medias and my email for that. So I opened the email and in the morning I have a groggy mood. You know, I'm too serious in the morning, so I just opened and like, oh, okay, that's it. That was like, I knew it. उनको गाली दे ईमेल में तत्काल में पासवर्ड. Yeah, mama, it's fine. I was just like, all right. I knew it. First reaction was, it's done, bro. Bro, passport was needed. Passport was needed, bro. You know, have you told this about your how you told this about to your family, or is it between you only? No, like after I woke up and नहा धो के फिर बताया मैंने, फिर मॉम को बताया, अभी तो पापा को तो नहीं पता. But I told this to mother and she was like she told me like कुछ गलत थोड़ी ना हो गया था इंटरव्यू में. लाइक नहीं तो मैं आई मीन बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो मुझे नहीं करा, मुझसे अच्छा होगा कोई तो उसको सेलेक्ट कर लिया. मतलब वाज लाइक जानने दे सुने. या मदर थॉट लाइक फॉर अ फ्यू सेकंड्स, for one minute she was like thinking, and then like, oh, okay, then she accepted. Then I told like people get like 50 rejections from 50 companies. This is just the first one, so mine's all right. She was processing, I guess. Yeah, she was. It's the like she is gonna tell this to father tonight. So it's fine. Then she asked like what's gonna happen now, like you know, like अगली बार ये कैसा होगा. I mean, you know, अगली बार ऐसी like मम्मी को इतना समझ में नहीं आता इनका इंटरव्यू वगैरह, तो उनको मम्मी को तो ऐसा ही लगता है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स की भर्तियां निकलती है ना, कि एक साल में अक्टूबर में निकली या फिर अगली साल निकलेगी, तो वो वैसा सोच रही थी. तो अब कब निकलेगी ऐसा पूछी मैंने, मम्मी पूछी तो आ जाए ना. ऐसा नहीं है, कंपनीज में तो कब भी इंटरव्यू दे दो, पोस्ट खुली रहती है. सो ऐसा मैंने बोला है. मैम ठीक है, अभी क्या ही कर सकता है. माँ दाई जो बताया उन्हें. Alright man, it's over. It's over. नेक्स्ट ईयर बोल देता मैं थी फिर से. मुझे भी यार, मैं नेक्स्ट ईयर तो नहीं बोला जा सकता. मतलब ब्रो मेरा तो गोल था कि दिसंबर तक कुछ तो कर लूँ, एटलीस्ट जॉब नहीं तो इंटर्नशिप तो करूँ. बट आई डोंट थिंक दिसंबर तक भी कुछ होने वाला है मेरा, जिस हिसाब से जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ अभी. I don't think I'll have an internship. Anything. I don't know what's gonna happen, man. But by December, I think you'll get a job. That'll be nice.
if it would have been me, I would be so pissed, man. I would have thrown a punch in the wall. Like, nah. Like I read like these comments, this discussion on Reddit, that some people are still getting the match, the document screening and all that are still going on. So maybe there is a chance that your application would get selected for the document screening. Like I saw a comment, so maybe who knows what's gonna happen. Some people are still having the first interview, getting calls for the first interview, so there is a chance that your application might get selected. I don't know, man. Mine is over. अब तो अगर दूसरी बार भी सिलेक्शन होता है ना, I mean for the third term interview call आता है तो I don't know, like मेरा तो मन नहीं है करने का, to be honest. For me it was like, yeah, I didn't even pass the documents issue, so yeah, I was feeling bad, but I was like, alright, if I were you selected in screening first round, second round, then got rejected, man, would have been so fucking fun. Bro, I was so hyped up. And last night I had a dream about it. Like like my big brother, he's like talking to someone on the call, and he was like, yeah, अभी तो एप्लीकेशन लगाई है, सेकंड इंटरव्यू हो गया है, अभी देखते हैं क्या होता है. ब्रो ये वाला ड्रीम आया मुझे. फक, सुबह उठते ही खोल के देखा भाई, हाँ हो गया मेरा तो. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक हाथ आया मुंह लगा. या दूर के अंगूर खट्टे, तो वो होता है लोमड़ी वाला, दूर के अंगूर खट्टे, ऐसा वाला चीज हो गया भाई. ब्रो like he said in the interview that it's not him who's gonna select the candidate. It's the second member in his team. So yeah, maybe like if it was upon him, the director, maybe he would have selected me, but I think it was the second person that made the decision. So yeah, that's all right. That's all right, man. तुझको कैसे या मैन, कभी ना कभी तो जाएंगे ही. मेथी इज जस्ट वन वे. या है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए तो मैं तो मेथी वेथी तो क्या ही करना. हम नेक्स्ट ईयर तक तो जॉब के लिए रेडी हो जाऊंगा मैं. अगर इस बार होता तो ठीक था मेथी, बट अगली बार के लिए तो मेथी नहीं करने वाला मैं तो. अगर गोल्स चेंज नहीं करोगे तो like you have to level up. If I was still thinking of taking the N3, I would have not have I wouldn't have cleared the N2. So I just have to step up. And like Methi is not the goal anymore. It's the job. So yeah, fuck Methi. I mean, अगर इस ईयर में सिलेक्शन करते तो ठीक है, बट अभी अगले ईयर तो इंटर्नशिप भी थोड़ी ना करा चाहूँगा मैं, और बाकी भी चीज़ें हैं बहुत सारी. जॉब इज द मेन थिंग.
जॉब बिना कुछ नहीं है भाई। तेरा क्या चल रहा है? इंटरव्यू वगैरह थोड़ी ना दिए तूने, और डीएसए की तो तू तैयारी कर ही रहा है, रिविजन। सो क्या माहौल है तेरा? आर यू इवन हियर? Oh, you're not here. Take the database and even click create. After creation, virtual automatically adds the connection environment variables to your project. You can see the vendor settings. You can see them under settings, environment variables. The most important is database QRO. Which contains the full string to your course. To use the same database locally during development, copy the connection string from the virtual database dashboard and create a copy the connection string from the virtual dashboard and create a .environment file in the root of your project. Tera, मैं तेरा. What if we get a remote job and apply to Methi as just to try? No expectations, but if we get selected, yeah, I mean we can go to Japan for 1 month to chill. Bro. But you'll have to work, in a remote job. In a remote job, you have to work. And for the internship, it's a 9 to 7 job. 9 to 7 work. So first, yeah. How are you gonna manage? When are you gonna sleep? No? You'll just go there and just go to the company, do your internship, come back to the room, and start doing your remote work. You'll have no time to visit, explore. I mean, मेरा तो internship चल रही jobs के लिए अभी अप्लाई नहीं कर रहा, थोड़ा DevOps और क्लाउड वीक है, उसको अच्छा करके फिर करूँगा एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर. बाकी डीएसए का रिविजन भी चल रहा है. Bro, nah. In the first place, I do not want a remote job. Fuck that. I don't want it, man. Remote job sucks. Bro, nothing will change. If I'll have a remote job, I'll still be sitting in this room. Yeah, rotting. Fuck it. I ain't doing remote. I'm not playing remote. Dev etc. What's that? Dev etc भी चल रहा. बाकी मैंने कुछ दिनों से अपने YT और इंस्टा को छोड़ रखा है. फालतू की वीडियो देखता हूँ, कुछ मिलता भी नहीं. So इसीलिए मैं मेंटेन प्लेइंग IG. I am. Bro, मुझे तो गुस्सा आया थोड़े दिनों पहले. बहुत सारा मैं वो चला रहा था, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, क्या इंस्टाग्राम. सो मैंने डिलीट मार दिया था. इंस्टाग्राम ही डिलीट मार, आई मीन
ब्राउज़र पे चलाता था मैं तो लॉग आउट कर दिया था, लेकिन जब सुबह इंटर्नशिप का देखा ना माथा घूम गया, फिर मैं इंटर्न पे इंस्टाग्राम दोबारा ओपन कर लिया ब्रो मेरा मन नहीं लग रहा था ना, तो इसीलिए Ghost of Tsushima in Japanese audio and Japanese sub listening भी हो जाती, साइड बाय साइड कुछ तो मिलता है, बाकी जापानीज की भी चल रहा है. हाँ that's good. I mean like you know if you like gameplays, just watch these gameplay videos in Japanese. Yeah, though there are not so good gamers in Japan, they all play the retro type shit or the Mario Kart and all that. Not a good games like the story games. They do not play that, so yeah, you can watch that. Playing story games is a lot better than watching random shit on YT and instead of scrolling. My head hurts. Yeah, that is so true. But like I don't have time, but like I would love to watch or like play these story games. Like just select something, just have something specific, a domain that you like to watch, and just keep watching that. Watching random stuff is just stupid. Environment.local. मेरी रूटीन यही है, काम then playing Ghost of Tsushima. Oh, you are playing Ghost of Tsushima? Actually listening भी हो रही साइड में, actively कुछ कर रहा हूँ. I'm not scrolling on white Insta like zombies and gaining nothing. वो तू खेलता है Ghost of Tsushima? खेलता है तू? Sheesh. I play of like 1 or 1.5 hours at night after completing my task. Oh, that's good. I thought you were you were watching. Yeah, with Japanese audio in Japan. Yeah, that is cool. देखने में मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है, इसीलिए I just want to shift my method of entertainment, और anime भी नहीं देख रहा, बोर हो जाता है. I am binge watching what you call that, One Piece right now. For the last 2 weeks I was like I was too distracted with this Meti and this result, so yeah, I was just binge watching. I'm at the 365 something episode right now. Yeah. Yeah, you're watching something good. I've already watched good stuff, every new thing I try, like anime, I got bored and leave. Yeah, that's also true. Like I also don't touch any new animes or anything, Yeah, I like long stories, so like I just don't want to watch something very short, like 12 episode anime, and then just forget about it. Yeah. I would love, I just watch the same thing but with a long story, every day. I don't have to, every other week I don't have to think and look for some other anime to watch. So yeah, that's what I'm doing right now. What on, like, do you play Ghost of Tsushima on PlayStation or PC? So for every week, for me, it was like search about anime, give it a shot, board, leave, then
Yeah, I did that for a while. Then I found One Piece. One day I was like, हटरे वैसे एंटरटेनमेंट के लिए इतना कुछ पढ़ रहा है, इससे अच्छा जापानीज कल्चर पे बेस गेम खेल लेता हूँ बिना सोचे पीसी. Yeah, that's cool. So you bought it or you just pirated it? What did you do? Guess you bought it. Nah, pirated. What? You know, like with the big titles, I do not want to pirate them. Yeah, ma, I'm, you know, like they are very long and then, nah. I get that it's same as original, but you know, like you get a lot of shit with that. Once I get rich, I will buy them for you for sure. Yeah, I also have the same mindset, like, you know, once I'll have money, I'll buy all the games that I played. I have not pirated, you know, like the big titles, or like never really, like a few titles only, and those were for my YouTube videos, you know, like only 10 titles, I guess, 10 something titles, and then yeah, I never did. Last time I purchased GTA 5, and that was my last purchase, because I will play those shit on PlayStation, and then I can can pirate. Yeah, actually that is better. कैसे तुझसे बिना बताए कोई मेरा पारे तुझको बनाने में कर दिया इसने सारी तुझे दिया आज की किया ओ आ तुझे जाने. क्या BCA तो यही ड्रीम है, मैड मनी अर्न कर के एक सेपरेट गेमिंग रूम बनाऊंगा, सारा दिन बैठ के खेलूंगा. एंड कमिंग बैक टू योर कंसर्न, इफ यू आर डूइंग रिमोट जॉब एंड इन जापान ड्यू टू मती, हाउ विल यू वर्क फॉर बोथ? सिंपली मैन, क्लाउड कोडेक्स जिंदाबाद, बस सारा काम 2 घंटे में ख़त्म. हाँ, किसका करेगा 2 घंटे में काम खत्म? हाँ, आई मीन तुझे इंटर्नशिप के लिए वहाँ जाना पड़ेगा ना ऑफिस में, और वहाँ बैठना पड़ेगा पूरा का पूरा दिन, एंड यू विल हैव योर कलीग्स, you know, like they are not stupid, like if you are doing something different, so like, you know, working for yeah, doing some other thing and then not doing your internship then. या तो बस आज YT चला रहा हूँ क्योंकि तुझे स्ट्रीम करते देखा, नहीं तो BC YT ज़्यादा नहीं चलाता. मैं स्ट्रीम तो मैं तो करता हूँ, वैसे तो रोज़ ही करता हूँ, बट थोड़ा मन नहीं करता था ना, तो स्ट्रीम मैंने इतना नहीं करा, मतलब 1 आवर 2 घंटे मैक्स करके ऑफ कर देता था मैं. तो क्या था बोल रहा हूँ मैं, या फाइन. वैसे मैंने पूछा था कि शोगी का क्या करना है. शोगी खेलना ही छोड़ दिया भाई अपन ने.
If you wanna do shogi, then let's do a shogi stream, man. It's been a long time. At least stream, तू भी stream कर लेना. शोगी करते हैं आज. If you have time. Remote का और बीच में मैथी वालों का. Man, like nowadays as companies, most of them are generating code from agents. Like company खुद से कहते हैं कि ये लो subscription और करो ज़्यादा काम. वो तो है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ऑफिस में बैठा है तो वहाँ पर और तू कोड जनरेट कर रहा है बट नॉट डूइंग योर कंपनीज वर्क एंड डूइंग योर जॉब, यू नो, योर रिमोट जॉब वर्क एट द इंटर्नशिप प्लेस. So wouldn't they notice? Wouldn't. Yeah, my Indian accent is getting back. It's getting strong day by day. Getting stronger, man. Man, it sucks. कितनों की लव स्टोरियां. छोड़ भाई. You know, like अपनी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुझे रिमोट वर्क भी मिल जाएगा एंड देन तुझे ये भी मिल जाएगा. ऑफिस में कोड जनरेट करूँगा इंटर्नशिप वालों का और लड़की ताड़ूंगा, फिर घर जाके रिमोट का टास्क लगा के छोड़ दूंगा और फिर जापान घूमूंगा. सपने तो बड़े बड़े हैं ब्रो, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है. शोगी का कल करते हैं. कल फ्री हूँ मैं, आज थोड़ा काम करना, सुबह बाहर था. ओके भाई, मैसेज तो कर दिया. अगर सामने से ही बोलना पड़ता है कि भाई आ जाए स्ट्रीम करें, शोगी करें. खुद से भी कर बोल लिया अगर, हाँ भाई मैंने अगर तुझे बोल दिया कि आज स्ट्रीम करेंगे क्या, हाँ ठीक है करूँगा, फिर करता ही नहीं है तू. चीता था उनको लास्ट टाइम है ना, लास्ट संडे उसने बोला था ना कि मैं आऊँगा. दैन मैंने उसको मैसेज पे लाइक उसने आया नहीं तो मंडे को मैंने मैसेज करा लायर. लायर भाई, रिप्लाई नहीं आ रहा 2 वीक से. It's been 2 weeks and he has not replied to me. Yeah, I called him a liar. That's it. मुझे लगा तू जापान जाने का डे ड्रीम कर रहा होगा, सोचा कि डिस्टर्ब नहीं करता हूँ. Bro, I wanted to play shogi so bad. Bro, Cheetah-san is living that anime MC life now. Fuck that, man. And it's all about money. Once I'll have a job, I'll have money and fuck. Socratic. अपना कभी नहीं होगा भाई. अपना है ना एलेबास्टा, वो है ना एलेबास्टर, वो वाला आके चलेगा हर बार. अपन मारते ही हैं. एटलीस्ट मैं तो वहीं पे हूँ. You know, if you're Indian, then you shouldn't have your hopes up. And at this time, yeah, man, once I get enough money, I'll not sit in this ass room after that. I will build another room and sit in that. Just kidding. I will go out. बीसी घूमूंगा, मूवी देखूंगा हर वीक, बढ़िया जंक फूड. वहाँ
एक्सपेक्टेशन से बहुत बीसी चीज़ है, जी फा देती है। Yeah, that's true. That's true. Don't get your high hopes up, bro. Sucks. Fucking sucks. मेरे बाल देख, बड़े होंगे। और भी बड़ी करूंगा इनको आगे तक। And like my hair doesn't have moisture. Like today they are looking black, but mostly they are brown. Bro. मुझे तो अब लगने लगा है ये जितनी भी हंगेंगे ओके हंगेंगे हैन मीति चुतियापा है, ये सब फॉरेनर्स के लिए है। बीसी लोड़ा हम कोई नहीं लेते इसे, बीसी तो जॉब के लिए ब्राइट और एक्सपीरियंस के बाद। या दैट इज ट्रू ब्रो, ना नहीं होता यार। आई मीन मैंने पिछली बार का रेडिट थ्रेड पढ़ा था मैंने, डिस्कशन जो नॉन टेक्निकल थे ना उन सब का हो रहा था, उन सबको हाँ भाई मुझे आ गया, मुझे मिल गया लेटर, मुझे सेलेक्ट कर लिया। भाई जो अपने जैसे होते हैं ना टेक्निकल वाला तो होना ही नहीं है भाई। आई थिंक नहीं होता यार, जिस हिसाब से इंडियंस टेक में ना हर जगह है, तो आई डोंट थिंक दे वांट अनदर इंडियन टू बी इन दैट, to be in there, tech thing. So it sucks, man. इससे अच्छा तो साला इतनी तो अच्छी जापानीज थी कि वो होटल मैनेजमेंट होता है ना वही कर लेता, उसी में नॉन टेक्निकल वाले में अप्लाई कर देता साला, उसमें तो हो जाता है सिलेक्शन। ये चितियापा जो है अच्छे कॉलेजेस को देखते हैं, उनको लेते हैं। वो पाकिस्तान वाला जो हैंड्स में गया था वो पार्क की बस यूनिवर्सिटी से, और स्किल चूतिया थी उसकी। आई मीन ठीक ठाक। दैट इज ट्रू मैन। इफ यू आर फ्रॉम इंडिया you have to be from IIT, yeah, you have no chance. Yeah. Sucks, bro, it sucks. Ha. Fine. Bro, bro, you would have had a job already if you had accepted that American company's offer. But you did not. या तो ये तो है, बीसी जापानी सीखो, काफ़े में जाओ, सेल्स में जाओ। बीसी आईटी में जाना इज़ टू टफ, एंड कंपनी भी कितना है आईटी में, इससे अच्छा जॉब लो जो जी फाड़ पैसा दे, या खुद का करो कुछ और फिर जाओ। या दैट इज़ ट्रू। बीसी मैंने देखा, बहुत सारा देखा मैंने कि नॉन टेक वालों का सिलेक्शन हो रहा है, बट टेक वाला एक भी नहीं था कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो गया इसमें। सिलेक्शन अगर घूमना या मूव हो जाओ, बाकी कंपनीज वाले बुलाएंगे। जापान इज टू टफ फॉर फ्रेशर्स, या फिर इंटरनेशनल कंपनी में जाओ लाइक अमेजोन, गूगल, एंड इंटरनल ट्रांसफ़र कर लो अपना जीपी ऑफिस में। ना लेट्स सी यार, वैसे like there are a lot of Japanese companies recently coming to India, so
you can apply to those companies, and then you know, like you can have your you can have your transfer. You can get transferred to Japan. That's fine. Bro, for me, it's the job, man. That's my goal. Ugh. Let me have a job and some money, and then I'll think of Japan. It's fine. At least it should be like, you know, it should be a Japanese company. You know, I have studied Japanese so bad. So yeah, at least I want to work for a Japanese company. एक तो पता नहीं कौन लूड़ा है जो हर बार पोस्ट करते रहते हैं Japan is shortage of engineers. So hiring for IT in Japan is booming. बहुत स्कोप है. नहीं कुछ नहीं. IT की तो अपनी गाँव रहती है. ये 5 साल बहुत कुछ नहीं बचेगा. Who knows? Who knows? Who knows? Bro sucks. You know, I have a question. Like, what is Maven? What is Maven? Didn't have a time. Mama said, my mama said, how can I hide this? Stay up on the rise, stay up on the rise, never come down. Oh. Stay up on the rise, stay up on the rise, and never come down. Oh. सॉरी मैंने एक दिन डेवलपर्स इंडियन का सबरेटेड को स्क्रॉल कर लिया. BCG फट गई. एक्सपीरियंस लोगों की जी फटी हुई है. Tier 1-2 वाले की जी फटी हुई है. PC कभी बुरा लाइफ चॉइस पे डाउट करना है तो हो तो विजिट. ब्रो यू नो लाइक रेडिट पे वही लोग जाते हैं जिनका कुछ होता नहीं है. जिनका हो जाता है वो रेडिट नहीं घूमते.
कुछ नहीं होने वाला भाई। नहीं, कभी तो ऐसी भी somehow I got in this company I know nothing like सारा टास्क वाइप कोड करता हूँ, इसीलिए अब डर लग रहा है कि वो पकड़ ना ले। नीड हेल्प। आई वॉज लाइक कहीं पानी नहीं, आई वॉज लाइक कहीं पानी नहीं और कहीं डूब। क्या बोल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। तू थोड़ी ना वाइब कोड करता है तो। It sucks, bro. एनवी फाइल्स छुपा रहा हूँ मैं, गलती से क्लिक ना कर दूँ इस पर। स्टैक हमने से अरे कोई रेडिट पे बोल रहा था मैं वाइप कोड करता हूँ, समाउ इंटरव्यू पास कर लिया, अब सारा काम वाइप कोड करता हूँ, कुछ नहीं आता, पकड़ ना जाऊँ, डर लग रहा है। सो इसीलिए मैंने कहा कईयों को पानी नहीं मिल रहा और कई डूब रहे हैं। बीसी ऐसे भी घुस पड़ते हैं कंपनी में और स्किल्ड वंस अनएम्प्लॉयड। यार मुझे अफसोस आता है कि ऐसे लोग कैसे ही घुस जाते हैं, कैसे ही इनको यार इंटरव्यू पास कर लिया इन लोगों ने एंड शेयर। You know, by looking at this example, actually it's not hard to get a job. You just have to have that talent of making them select you, making them choose you, not you applying there and hoping that they select you. No, you make them. Stuck on their eyes. Replace the value with an actual is your effort. To use the same database locally during development, copy the connection string from the virtual dashboard and create environment local file in the root of your project. Replace the value with the actual connection string. Replace the value with the actual connection string from your virtual dashboard. Next. अरे ऐसे बंदे एक चीज चैट के इंटरव्यू पास करते हैं, वो कुछ तो होता है, हो रहा
Damn. हमें कब मिलेगा भाई? हाँ, हमें कब मिलेगा पैसा? Replace the value with the actual connection string. कभी कभी हंसी आती है कि सब कुछ हमारे टाइम पर ही होना था कि क्लाउड एजेंट्स एआई टेकिंग ओवर कोडिंग. You know, like, in a way it's good. You know, like, we just don't know how to get over it. I mean, you know, we are still like, you know, like 10 years from now, you'll just think, and like 10 years from now it's gonna get much harder than this. Yeah, so I guess we are in the good time. The AI agents are still, you know, like in the you know, they are still updating. You know, अभी भी इनका चल रहा है भाई. इसके बाद तो 10 ईयर में तो अपन ये एजेंट्स वगैरह एआई वगैरह कितना भयंकर हो जाएगा. ये हमारे टाइम में ही सीएस सैचुरेटेड हो रहा था. और क्या ही कर सकते हैं भाई. ठीक है यार, क्या ही है. यू नो द करंट मार्केट इज नो वन इज वांट टू हायर junior devs, but the engineers who are experienced उनकी डिमांड बढ़ रही है. Other packages going crazy. So what should I do? I need to become cracked just to get high. Replace the value with the actual connection string from the virtual dashboard. Next, automatic. Next.js automatically tools during development, so no extra configuration is needed. यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है. मैंने जितनी भी मैंने ओपिनियंस ब्लॉग्स एंड और शिट लाइक 100 आवर्स की रिसर्च ने ये कंक्लूड किया है कि कीप योर फंडामेंटल शार्प एज है. लाइक फंडामेंटल्स आर गोइंग नाउ नोवेयर. या yeah, so no extra configuration is needed. वो क्या ही हो सकता है. क्या ही हो सकता है. कुछ नहीं होने वाला भाई. बल मैंने पहले ही कर दिया बट I already have that.
ये क्या है भाई? अभी तो चल रहा था whatever. भूख लग रही है यार मुझे तो. Like apart from coding, you should also know the OS, CN. What's a CN? Oops and all that. एक तरफ अच्छा ही है कि बार रेस हो गई है. Now wannabe coders and pretenders will get filtered out. So deserve करते हैं mostly. या अभी मेरा भी सच बताऊं तो आई एम नॉट, आई एम नथिंग, यू नो, मुझे कुछ नहीं आता. एंड you know, like compared to you, I know nothing. So कौन ही हायर करेगा मुझे? So that is good. Like I also wanna be get a little good and then have a little confidence. Like yo, I am something. I can do it. Then फिर बाद में जाके रिजेक्शन मिलती है तब बुरा महसूस कर सकता हूँ. बट आई हैव नो राइट टू बी you know, get mad if I don't get selected for something because I'm not capable enough. आने या जाने से कुछ नहीं होता. मैटर यही करता है कि आना चाहिए, वो ही मैटर करता है. एंड आई थिंक यू एंड आई शुड हरी बिफोर द मार्केट की और चीफ हटे. या ब्रो तेरा तो हो जाएगा, मुझे मुझे करना पड़ेगा हरी. तो तू भी कर भाई. अब तो इंटरव्यू फीस चालू कर दे तू ना अपना. 1 या 2 महीने तक, यू नो, लाइक मोस्टली 1 मंथ तक चलेगा तेरा इंटरव्यूज. अगर मैंने बहुत सारे इंटरव्यू कॉल्स आते हैं तो, और मैक्स 2 months एंड यू विल हैव अ जॉब. दैट्स व्हाट आई बिलीव. यू नो, लाइक अगर अपन ट्राई करते हैं ना तो हो जाता है. इट्स नॉट दैट हार्ड. But just focus, put your all focus on getting selected for the interview. And फिर इंटरव्यू में तो कुछ भी करता है, जो तेरे पे डिपेंड करता है, तेरी नॉलेज पे डिपेंड करता है. एटलीस्ट हैव द इंटरव्यू. मेरा तो अभी भी ब्रो, अब है ना, सर्दी आ ही गई है, मतलब आने वाली है. 2 weeks और 1 month बाद ब्रो पूरी रात स्ट्रीम करने वाला हूँ अब तो. ना पूरी रात कोड ही कोड, जैसे लास्ट टाइम करा था ना मैंने जापानीज. फक दैट. फाड़ देने वाला हूँ भाई. आपकी बार फाड़ दूंगा मैं. And yeah, like whatever you said about the B6, that's so true. The OS, computer networking, oops, and all that, the memory management, and all that, like it's so important. If you don't have the fundamentals, like if you do not understand the core B6 of the computer, like how the data is, the, you know, the program is handling or not, you know, so, you know, like, you know, whatever you write the code, it doesn't matter because you do not know how the machine is processing your code. Fuck, it's so important. तेरा कर करके जीना फट जाए. I mean, it's just my opinion कि you should hurry and spend more time so you at least go to with basic month और 2. बाकी मुझे तो खुद क्रैक बनना है.
ब्रो बोला ना मैंने, भाई अगर I don't know about this year, but like ये विंटर्स आएगी और खत्म होते होते तो bro, I'll become so cracked at the tech stack that I have. I'm gonna be so cracked. Bro, 12 घंटे स्ट्रीम करने वाला हूँ अभी मैं. Shit it. And in the next 6 months, I'll have a lead code night. Okay? That's not a joke. That's not shit, bro. I'm gonna become a lead code night in the next 6 months. Like आजकल तो कोड को कोई भी कर लेगा AI की मदद से, but who knows the fundamentals, how the thing is working under the hood. Yeah, that is so true. I mean, this guys will stamp out. This guy will stamp out all those code holes with no fundamentals. Yeah, BC contest तो मैंने भी देना है यार. मैं तो BSS B6 रिवाइज करता हूँ DSA 1 hour daily. Fuck man. आज का तो पता नहीं, बट कल से है ना डेली लीड कोड करूँगा. और yeah, perfect. How do you become a knight? Do you have to do the lead code, what you call that, अभी बोला ना तूने, लीड कोड कॉन्टेस्ट करने पड़ते हैं, या फिर ऐसे तू प्रॉब्लम सॉल्व करता जाता है तो नाइट बन जाता है? B6 या BSS B6. Bro, 6 months is enough to become a knight. And like I should have a goal so I can look up to. It's not about reaching to the knight. Like if I'll have this goal, I'll be able to like every day I'll have to do something in DSA and on lead code. So ना अगर हर रोज ये चीज करता रहूँगा तो बहुत सारी चीजें लर्न भी करूँगा और वहाँ तक भी पहुँच जाऊँगा. Like Antu was same. Antu was just, I did it just for the job, just for the certificate, but like in the process I learned a lot. So yeah, नाइट वगैरह तो मुझे नहीं है उसका अब ज़माना भी नहीं है मुझे अब तो इंटरव्यू इतने DSA फोकस होते भी नहीं. You should be able to create or ship products वो मैटर ज़्यादा. That is true, but still I'll just have a goal and at least like like if I'll have this goal, so I'm gonna work hard. Without a goal, doing something, it feels like there is no end. So yeah, just for that reason, yeah, I'll try to become a knight. Yeah, and like मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं. लाइक 6 months मैंने ये करा लीड कोड एंड देन आई cracked the Microsoft internship, or I got a job there. Like fuck that, if you get that, like I'll do it. Though I do not want to go for these big companies, but I'll try to give interviews at least if I can.
Let's see what happens. लीड कोड 9 के लिए कॉन्टेस्ट देने पड़ते हैं, लाइक 4-5 प्रॉब्लम्स होती, डिफ़िकल्टी इंक्रीज होती, लिमिटेड टाइम में करनी होती है और एवरी संडे सुबह 8 बजे होता है। और मुझे सुबह 8 बजे उठना पसंद नहीं है, इसीलिए भाई मैं रात को सोऊंगा ही नहीं सोने वाला ही नहीं हूँ मैं, और क्या, वैसे भी मुझे नींद तो आती नहीं है। मेरा है कि रात में ही ज़्यादा आई एम मोर प्रोडक्टिव एट नाइट टाइम देन एट डे। हम कर लेंगे, देखते हैं, बट लाइक कॉन्टेस्ट तक पहुंचने के लिए आई हैव टू लाइक लर्न द फंडामेंटल्स फर्स्ट। और मुझे आज सुबह उठना पसंद नहीं है, आज तक कभी नहीं दिया, बट एक बार दूंगा कभी। कोड फोर्सेस का मे बी मंडे फ्राइडे को होता है, शाम को 5 बजे उसका एक दिया था। आई डोंट रियली नो मच अबाउट दिस contest and not shit, but first I'll just focus on learning these algorithms and then solving the questions, and after I'll have some confidence. At least I'm just doing this for the confidence and just to be better at, at it. ट्राई करने के लिए भी दे सकता है लीड कोड, चाहे compete मत करना, बस देख ले पैटर्न के लिए। या करूँगा, कभी तो करना ही है। I'll try, man. ये कॉन्टेस्ट होस्ट तो Tier 1-2 वाले हैं जो सारे दिन BCDS से मैक्सिंग करते हैं, क्योंकि उनकी थाली में तो गूगल मेटा तो मिल ही जाएगी, उनको ज़रूरत भी नहीं जो भी है करना तो पड़ेगा भाई। अब उनके पास वो है, उनकी कंपनी आई मीन कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं, तो ठीक है, बट लाइक इंटरव्यू तो सबको सेम ही देना पड़ता है ना, चाहे ऑफ कैंपस हो या इनका ऑन कैंपस। और ऐसा तो है नहीं कि भाई बिना लाइक माइक्रोसॉफ्ट गूगल में जो इंटरव्यू देते हैं वो सारे कॉलेजेस से ही आते हैं। भाई अगर तुम अच्छे हो तो सिलेक्शन हो भी जाता है। हम जैसों के लिए तो सब कुछ आना चाहिए, स्टार्टअप के लिए डेव्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम जैसे फ्रेशर्स को बिग MNC तो हायर नहीं करेगी पहली बार से, तो एक्सपीरियंस लो, स्किल्स मैक्सिंग करो और स्विच। या मैंने like from the starting I'm aiming for the startup, so I have no problem with that, but dev भी करता हूँ तो like I don't have that confidence, so just for that I want to do this DSA and lead code, and then at least I have some confidence built up, and then I'll be able to clear the interviews buttery smooth. गूगल मेटा का इंटरव्यू क्लिक करना तो मुश्किल है ही, लाइक वो तो चलो स्किल्स पे है, वो तो तुम्हारे हाथ में है, बाकी वो फ्रेशर्स में विदाउट IIT वालों को रिज्यूमे फिल्टर भी नहीं करता है। रियली ब्रो मज़ा ले रहा है क्या मेरा ठीक है जो भी है भाई, मुझे तो जाना भी नहीं है गूगल मेटा में, तो बट इंटरव्यू के लिए लगाऊं तो एप्लीकेशन, ऐसा तो नहीं है। I mean just for the experience, like I'll see if my application gets selected and I go to the interview stage.
I'm not joking. Unless you have referral, they can give you a chance at interview. I'll ask Sparky for a referral. Yeah, I'll get an interview at Paytm. So yeah, just kidding. But man, let's see. Baki Mang prefers IITians as freshers, like it's said that it sets the attitude like he's an identity and he's hardworking, smart, उनका ये nice है। पता नहीं भाई, मना भी नहीं करूँगा और पूरी तरह ये सच भी नहीं मानूंगा, कुछ भी हो सकता है, मैंने तो करा नहीं। बाकी इवन स्पार्किंग का भी डायरेक्ट नहीं हुआ गूगल में। ही वर्कड इन अ स्टार्टअप, देन डीएसए मैक्स अप्लाई और मे बी गॉट अ रेफरल, आई डोंट नो। जो भी है, जैसा भी हुआ है। मुझे जापानीज कंपनी के लिए वर्क करना है भाई। एंड यू नो लाइक आई हैव अ I've already thought like मैं कंपनीज की साइट्स लाइक ये टोक्यो डेव, जापान डेव, इन साइट्स पे तो अप्लाई कर भी लाइक उन साइट्स पे भी अप्लाई करूँगा, बट मेनली लाइक आई एम गोना इम्प्रूव माई जापानीज एंड जस्ट जो मेन साइट्स होती है ना कंपनीज की, वहाँ का हायरिंग पेज ढूंढूंगा सब बहुत सारी कंपनीज का एंड डायरेक्टली वहीं से अप्लाई करूँगा। फक इट मैन, कौन करेगा भाई? अगर वैसा नहीं करते हैं ना तो डायरेक्ट जापानीज कंपनीज में अप्लाई करूँगा मैंने तो ये सोच रखा है मैं जापानीज और इम्प्रूव कर लूँ थोड़ी, मोस्टली स्पीकिंग। बाकी टैब वगैरह तो है। जापान का मुझे बीसी एक चीज़ से होता है, वो इतना अच्छा पे नहीं करते जितना बाकी कंट्रीज करते हैं रोल के लिए। दे आर बिट चीप लाइक इंडियंस, बट दे आर नॉट, यू नो। आई थिंक लाइक यू नो you if you'll go there you'll have so much job, you have a job security first, and बाकी तो कंपैरिजन इंडिया से कर रहा है, दैट इज सो चीप, यू नो। इंडिया में भाई एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है ना। एक तो कंपनी में जॉब कर रहा है और बाकी तो कंपनी के बाहर निकलेगा। इंडिया में क्या है, वही गंदी सी रोड, वही गंदा संदा सब कुछ, वही भीड़ भड़ाका। बट इफ यू आर वर्किंग फॉर अ जापानीज कंपनी इन जापान, you have everything, you know, that the environment, what you call that, the way of living. I mean, the life is so rich there compared to India. India sucks. You can search on Google Japan quite less for same role IIT in the. चल इंडिया छोड़ बाकी. I know the pay is less, the pay is very less, but still the quality of life is very much better than other countries, so I'm totally fine with that. I have no problem, and I'm from a third world country, so you know, like Japanese yen में कमाकर yen में कमाऊंगा और इंडियन रुपीज़ में भी भेजूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है. एवरीथिंग उधर भी मिलेगा, एनवायरनमेंट एंड ऑल द, बस जापानीज़ नहीं लिखी होगी दुकानों पे.
whatever man, अब like तेरी तुझे ये सोचना है जो भी करना है, तो जा अमेरिका, फिर क्यों जापान के पीछे पड़ रहा है वो, like work like balance में, and I guess 4 days बाकी और पाँच. whatever man, अब जब जैसा तुझे लगता है ना वैसा कर. मुझे तो इंटरेस्ट है नहीं यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज में, सो मैंने तो नहीं करना है वहाँ पर. और अगर कोई जापान में कंपनी होती है यूरोपियन, यू नो, इफ दैट कंपनी इज इन जापान, आई हैव नो प्रॉब्लम, यू नो. Fuck that. I don't care. I don't care. My goal is to work in Japan. That is it. I don't wanna compare. You know, if I get what do you guys say that 20 billion or 40 million? 40, I don't know, like, yeah, there was a, you know, if I get the money that I'm satisfied with, I'm all right. और वैसे भी मुझे पूरी जिंदगी थोड़ी ना निकालनी है एक कंपनी में. लोग रोते हैं भाई, और इतना कम दे रहे हैं. ब्रो, जस्ट लुक एट दी. हाँ, yeah, you can say like you like Japan and you wanna work there, fine, but your work-life balance and environment, though, you don't know shit, you know, like you don't know anything about work-life in Japan because you have not worked for a Japanese company and all that. Yeah, like without like, now time is changing. They are hiring foreigners, so they're not gonna make you work like you know, like the old ways. So of course, if the company is internationalizing, then they are adapting to the new way of doing things. So yeah, you just, you know, like yeah, अगर तू खुद ही ऐसे उल्टे वे में सोचेगा तो भाई, yeah, the you know, like nobody can change your thinking about that. और बाकी अगर तुझे कोई गलत कंपनी मिलती भी है तो तू स्विच कर सकता है, छोड़ सकता है नौकरी. वर्क तो तूने भी नहीं किया, मैंने सर्च करके बोला है. थ्रोइंग इन द एयर. ब्रो, मैंने भी तो देखा है ना, तूने सर्च करा है तो मैंने भी सर्च करा है. I know, like people say there are companies like that, but you know, as the companies are, I'm not throwing in the air. As the companies are hiring international employees, so the modern startups, especially the startups, and that's what I wanna work for. So वहाँ पर things are changing. बाकी तो ठीक है. जापान में मैंने कहाँ किया, तो बस ये कह रहा, सारे ही रहते हैं इसमें. लीव इट मैन. अभी इस टॉपिक पर बात करने से भी कोई वो नहीं है भाई. अगर पे लेस करते हैं तो मत अप्लाई. आई मीन, जस्ट रिजेक्ट द ऑफर and apply for something that they, you know, for the post that is giving you the desired amount for your service. और वैसे भी ये तो है नहीं कि सारी कंपनीज एक ही तरीके का पेमेंट करती है. बहुत सारी कंपनीज है. अब you just have to do the research. You know, भाई अगर तुझे वो जाकर 1 लाख रुपए दे रहे हैं महीने का, तो तुझे नहीं करना तो मत कर अप्लाई. सीधी सी बात है. और सर्च कर और रिसर्च कर.
यही है भाई। और बाकी भाई तुझे करोड़ों चाहिए जस्ट एज ए फ्रेशर, then then maybe it's not possible। भाई मैंने तो ऐसे सोच रखा है। एंड या फर्स्ट जॉब से तो इतना कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि भाई एक बार में वो करोड़ रुपए दे रहा है, ऐसा तो होगा भी नहीं। Yeah, just leave this topic, man. It's kind of irritating. people like लोग पहले से ही सिनेरियोज सोचने लगते हैं कि यार कम दे रहे हैं पैसा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मत करो अप्लाई यार, वो क्या ही है, कम दे रहे हैं तो भाई अगर तू सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो मत कर, और जगह ढूंढ। जापान में तो कुत्तों की तरह काम करवाते हैं। जब मैं ये सुनता हूँ ना भाई, मुझे मेरा तो बुरा बुरा आई मीन बहुत इरिटेट होता है भाई। अगर करवाते हैं तो सारी कंपनीज में थोड़ी ना करवाते हैं भाई। जिस कंपनी में अगर तुझे अप्लाई करा, जॉब मिल गई, वहाँ कुत्तों की तरह तुझे काम करवा रहे हैं, मत कर, छोड़ दे। मेरा तो बस इतना ही है। I just put out a general point that Japan pay less for. I know that, and I already know that compared to like European countries, they do pay less, but like I'm looking on the, I'm focusing more on the quality of life, whatever they are paying, and if like all the transport, everything, the company, you have so many places to visit, and like it's so peaceful. So yeah, I'm looking at that. I'm just अगर तू सोचेगा सिर्फ कंपनी एंड पेमेंट पर, अगर वही फोकस है तो तुझे बाकी चीज़ें दिखने ही वाली नहीं है। और बाकी तो यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहा है तो वहाँ का भी तुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, बट वहाँ के भी अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। मे बी लाइक लाइक दैट थिंग्स यू वुड नॉट लाइक अबाउट दैट, बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। तो बीसी जापान ही बेचने चालू कर दिया, लॉल मैंने तो बोला ही नहीं, मैं जापान कुत्तों की तरह काम करवाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट अबाउट यू। मैंने बहुत सारा लाइक यहाँ पर मेरी स्ट्रीम पर भी एक दो बार लोग आए हैं ऐसा जापान में कुत्तों की तरह काम करवाते हैं। अच्छा बोलने वाले तो उस चीज़ को मैं तेरे ऊपर नहीं ले रहा, पूरा तेरे से नहीं बोला मैं पिछले जो एक्सपीरियंस है ना उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। Yeah, I said in the P exactly what you just said, clean air, infrastructure, transport and all that. Yeah, whatever. Bro, like, like, personally, मेरे से जो एनवायरनमेंट है ना वो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज के वहाँ की जो कंपनी वेस्टर्न कंपनीज है ना कंट्रीज, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो मेरे से मेरी जो पर्सनालिटी है ना उसके हिसाब से मैच नहीं करता। सो या दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। the society that most matches with my personality is Japan or Korea or the Asian countries. So that's what I'm saying now. That's it. And they pay exactly that. I mean, like, वो तो मुझे भी पता है अब, things have changed a lot since IIT job. Yeah. एंड वैसे भी तूने मुझे एक बार बताया भी है ना कि अगर तुझे अमेरिकन कंपनीज में जॉब मिलती है तो तू वहाँ भी कर लेगा, बट आई डोंट हैव लाइक दैट काइंड ऑफ प्लान। इट्स लाइक आई डोंट वांट वर्क फॉर आई डोंट नो मुझे नहीं करना अमेरिकन कंपनी के लिए काम। ये बोलना कि तुझे वेस्टर्न एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, आई मीन इट्स नॉट अबाउट मुझे अच्छा लगता है, बट
यू नो लाइक एवरी डे वहाँ पर रहूँगा तो या लाइक कुछ ना कुछ स्टफ हैपन होगा एंड मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे या दैट डजंट मैच माई पर्सनैलिटी, दैट्स इट मैन. बाकी अगर तू ये डिबेट करेगा आँख बंद करके जब को बाकी बेकार, I never said that Japan psycho and other countries बेकार. I didn't say that, but you know what matches with me is like what I prefer, like like you would not. So yeah, it's just my preference. And मैंने तो तुझे you know like you are saying they are paying less and all that, so मैं मेरा point रखने की कोशिश कर रहा हूँ. That's all I'm saying. I'm just making my point, like why I like you're totally fine with working in working in the West, but ma I'm like I'm enough. I don't wanna go there as another Indian. Yeah, there are already a lot, many there, so bro, you know वेस्टर्न अच्छा लगता है नहीं लगता. मैंने ऐसा बोला कि फॉर वर्किंग देयर, फॉर डूइंग अ जॉब, आई डू नॉट लाइक द एनवायरनमेंट. ओके ओके, एंड if it's about visiting those countries, then yeah, of course I definitely would like to visit those countries, but I don't wanna live there or work there. Yeah. कितना बताऊं कोई मैं पूछूं से क्या लगाऊं BCA करना था, अब क्या ही मैं बातें करने लग गया हूँ. Yeah, man, for me in the future, I of course will take or go where I will found ki yeah, this thing is better, and yeah, back I'm not really in Japan. Really ki Japan छोड़ के कहीं job नहीं करूँगा. Yeah, you have your like your goal is clear. Like my goal is clear that I only want to work in Japan, and for now and in the future, like मेरा अभी का goal यही है कि I want to work in Japan. For future, after getting a job in Japan, I cannot say anything about that. But yeah, अभी के लिए तो मेरा वही का ही है. But तेरा ये है कि भाई अभी तुझे वेस्टर्न कंट्री में भी जॉब मिलेगी तो कर लेगा. I don't wanna do that, bro. मैंने 2 साल लगाकर जापानी सीखी है, तो अभी मेरा ज़्यादा वो वही है ना कि या अभी भाई मैं पूरी मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता. Yeah, man. बाकी if pay is good, I can come to Japan anytime. बस मुझे पहले इंडिया से निकलना, बाकी कंट्रीज बाद में चूज़ कर लूँगा. बाकी it's true that I want to experience working in Japan. Yeah, that's good. पर तेरा है कि भाई तू कहीं पर भी जाए, तेरे को निकलना है बस. यार मेरा है कि
मेरे को जॉब करना है तो बस for a in Japan for a Japanese company in a startup. You know, I want to learn how these startups are built in Japan, and then, you know, like eventually my biggest, like, my dream is to have my own company open there in Japan. Yeah, so for that reason I just cannot go to some other country and then come back to Japan just to open my company. Like that is going to be, nah. जापान में रहकर जापान में कैसे कंपनीज बिल्ड करते हैं वो सीख कर फिर खुद का करूँगा, फिर यू नो आई हैव एक्सपीरियंस. मेरा वो है. But my path is different than yours. In a way, they can seem that we have same goals, but definitely your goals are different than mine. Mine are different than yours. Yeah, like if I'm working in Japan and after some of years I got better offer in Silicon Valley in a good lab where are doing groundbreaking innovation, I will go there because I want to do something groundbreaking. Yeah, that is true. That is understandable. But मेरा इनिशियल गोल यही है कि मुझे खुद की कंपनी खड़ी करनी है, not keep working as a, you know, not keep working for some other company. तेरा जैसे बोल दिया ना, अपनी दोनों की रोड वहीं पर ही डिविएट कर दी कि तेरा यह है कि जॉब कर अगर तुझे लेकिन ना तुझे कोई ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग करनी है तो उसके लिए भी तुझे जॉब ही करनी पड़ेगी. और मे बी लाइक यू कैन डू योर ओन थिंग एज वेल, बट मोस्टली देर आर चांसेस लाइक you know, like you want to work on a project that yeah, that is doing this kind of stuff, so you'll be working for some other company. So I do not want to do that. या वो तो मेरा भी है और ये हो जाता है इफ़ यू हैव बिग एम्बिशन इंटरेस्ट इन सीएस. बाकी बंदा खुद का कुछ कर लेता है, ही विल नॉट डू जॉब इन हिज लाइफ टाइम. या मेरे तो गोल्स क्लियर ही है, बट एक बार जस्ट टू यू नो गेट आउट ऑफ दिस शिट होल and get the chances, opportunities, I have to get a job. And you know, like किस्मत के दरवाजे मुझे खुद से खोलने पड़ेंगे, फिर everything will come. दरवाजे अभी बंद है ना ब्रो. मेरी इंग्लिश नहीं निकल रही भाई, क्या हो रहा है आज? इतने दिन से करा नहीं ना मैंने, एक्सेंट भी इतना स्ट्रांग आ रहा है. शौक लग गया मुझे तो, शौक. भूख लग रही है वैसे तो. शौक बाद में लगता रहेगा, बाद में लगता रहेगा शौक. मुझे लग रही है भूख. सपने सुहाने छोड़ के बीसी अभी दिल्ली से अगने गए नहीं कोई हम में से. हाँ क्या आगे? ओ सपने सुहाने छोरों के बीसी अभी दिल्ली से आगे गए नहीं कोई हम में से. या सपना देखना
छोड़ना नहीं चाहिए। भाई जो सपने देखते हैं उन्हीं के पूरे होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई। वरना पढ़े पढ़े तो किसी को ही मिलती है जॉब, कौन ही जाता है, किसी के साथ क्या ही होता है, कुछ नहीं होता भाई। पढ़े पढ़े तो कुछ नहीं होना, सपने देखोगे तो पूरे होंगे, अदरवाइज पढ़े रहो भाई, क्या ही है। सपने सुहाने लड़कपन के। ब्रो ये चश्मा उतारता हूँ तो कुछ नहीं दिखता। सपना देखो बाकी काम भी ऐसा करो जो उस सपने देखने को जस्टिफाई, बाकी अकेले सपने देखने से सपने भी सपने ही रह जाते हैं। वही तो, सपना देखो और उसकी तरफ काम करो, बाकी तो कौन है भाई कौन। Oh, oh fuck. क्या ही है। जिस हिसाब से अभी ये काम कर रहा हूँ मैं, ऐसा इतनी स्पीड से लगता नहीं सपने इतनी जल्दी होने वाले हैं। ओके मैंने अपने इनिशियल 2 years का सपना देख लिया है। लाइक आई एम इन टोक्यो बिग एस हेडक्वार्टर्स फकिंग। या जा जाओ भाई जा। I'm gonna delete that comment. वो क्या है, फालतू फालतू कमेंट देता साले। भाई भाई मैं भी स्ट्रीम बंद करता हूँ यार, तो रोटी खाऊंगा, मैं तो खाना खाऊंगा एंड फिर करूँगा, खाना खा के करूँगा भाई मैं तो स्ट्रीम। अभी नहीं हो रहा है, पता नहीं है। जस्ट वेट फॉर मी लेडी, आई एम कम टू। Brad, don't make this. Don't do this. सारा गंदा कर देता है माहौल। चल बाय बाय, मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ अभी, मैं थोड़ी देर बाद में करूँगा स्ट्रीम साला। Bro, this is my motivation. What do you say, Holmes? Well, whatever. Good motivation. अपने पास रख लेकिन